Yes. In yesterday's class, as again I'm repeating, array is the collection of homogeneous data elements stored in the continuous memory, or you can say that array is the similar data type element stored in the continuous memory location. Okay, it is a set of, or it is a collection of similar data type elements stored in a continuous memory location, right? An array is the element value. Now how many element we are having, it depend on the size of the array. Okay, number of element. At the time of the declaration, we are giving the number of elements. See over here. In this example, int arr square bracket sign is must, then only it is compiler will understand then this is the array. Okay, then the new keyword, because it is the composite data type or the non-primitive data type, so it is new keyword we are writing to allocate the memory. Then how many integers? 10 integers. This is known as the subscript. It is known as subscript. Okay, means how many number of elements are here? 10 number of elements of the integer data type. Okay, we are going to be stored in ARR array. Okay, simply meaning of this statement is ARR is an array having the 10 elements of integer. Okay, right? Means 10 values of integer data type. Are going to be stored in ARR. Okay, are going to be stored in ARR. Okay, now if I want to make array of the character data type, so simply I will use the char ARR new keyword char 5 of the 5 element. If I want to store 10 elements, then I will write 10. Okay, string का बनाना है तो string data type, then name of the array. Every time there is no need to take the name ARR, you can take any name like the variable name. Okay, if I'm using here name, it means name of the array is name. New string 5. Okay, now initialization of the array. Now how to initialize? See, variable, how we are initializing the variable? First we are writing like int a. See that int a is what? This is the declaration of the element, right? Declaration of the element. Now if I want to store the values, if I want to initialize, so what I will write? Int a equals to 5. Okay, I can write like that also, or I can write int a equals to 5. This is the declaration with initialization. Okay, इसी स्टेटमेंट में ही मैंने डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, राइट? ओके, हाँ, सेम हियर. This is known as your static initialization, right? Static initialization. This is known as your static initialization. Okay, means compile time पर ही variable create होगा और उसमें value store हो जाएगी, right? Now, how to initialize the array? अभी जब मैं array declare करूं तभी मैं array को initialize भी कर सकती हूँ. Okay, if I am doing the static initialization, so there is no need to declare the array by using the new keyword. ओके ऐसे ऐसे न्यू कीवर्ड करके एरे को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. इफ आई एम क्रिएटिंग द एरे एंड इनिशियलाइजिंग इट स्टैटिकली. ओके, इफ आई एम स्टैटिकली इनिशियलाइजिंग द एरे, यहाँ पे लिख लो स्टैटिक, राइट ऑल दीज थिंग इफ इट इज नॉट गिवन इन द नोट्स. सो सी दैट इंट मंथ. So what is the name of the array? Month. Okay, now here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, it means here number of elements are 12. Now no need to write over here. Okay, so here the size of the array will be 12 int month. Okay, it will be like that.
int month 12 ऐसे लिखा, then also means number of element 12. Okay, is it correct or not? I'll tell you afterwards. See that here size of the array will be, you tell me how many number of elements are here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So size of the array will be 12. ओके यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, and here I'm writing 12. 13, if I'm writing 13, 1 2 3 4 5. See there, some example I want to show you here. See that everyone here. Public static void main. Now I am declaring the array with it. Okay, then here I am writing system dot out dot println array is okay, right now only this one. Then system dot out dot print. Now I'm executing this. Array is. Now see that if in this array int month, okay, see this array I didn't declare by using the new keyword. क्यों नहीं डिक्लेयर किया है? बिकॉज मैं इस एरे को यहीं इनिशियलाइज कर रही हूँ. स्टैटिक इनिशियलाइजेशन आई एम डूइंग हियर. ओके, तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन जब करते हैं तो सिर्फ एरे का डिक्लेरेशन, ठीक है, देन यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपको डिक्लेयर करनी है. हियर आई डिडंट गिव द साइज ऑल्सो. ओके, साइज भी नहीं दिया है एरे का. But still, what will be the size of the array? How many elements will be stored by the array? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 elements. How many numbers of elements? 12 elements. ठीक है, तो ये array कितने elements की हो गई? 12 elements की. ओके, अब अगर मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, इसे मैं हटाती हूँ. यहाँ पे देखो int month 12 equals to 12. सी ये रॉन्ग है. दिस इज द मिस्टेक. हियर यू कैन नॉट राइट. जैसे हम जब भी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो वी कैन नॉट राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस. ओके, दिस इज योर एरर. Why it is error? Because जब मैं यहाँ ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस में when I am giving the elements, then automatically compiler will understand कि how what is the number of elements. Okay, so this is your error, right? If I am declaring like that. Okay, अभी देखो, if I am declaring like 13, okay, and this is the size. Then again means I cannot give the size over here in the number of in the subscript. ठीक है. Now how to access the element? See that if I am declaring, if I am accessing month, अच्छा इंडेक्स नंबर से ही मुझे एक्सेस करना है, राइट? आई एम गोइंग टू एक्सेस बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर. तो ये 1 का इंडेक्स नंबर 0, 2 का इंडेक्स नंबर 2. ओके, चलो रुको, यहाँ पे 100 लिखते हैं. आई एम चेंजिंग द वैल्यूज. 200, 300,
400, 500, 600, this much only. Okay. So number of elements now 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of elements are 6. Okay. Then if I want to access element 1, तो देखो ये 100 जो है ना, ये इंडेक्स पोजीशन हुई इसकी 0, इसकी इंडेक्स पोजीशन 1, इसकी 2, 3, 4 और ये 5. ओके. 0, 1, 2, 3, 4, 5 डजंट मीन्स कि एरे की साइज 5 हो गई. नहीं, एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से काउंट कर रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, एंड 6. मगर इंडेक्स पोजीशन 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, लिखो ये सब, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे. ठीक है, तो व्हाट इंडेक्स पोजीशन आई विल राइट 0. ओके. नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस थर्ड वन, third element means first, second, third. So what I will write? 0, 9, 2. Okay, third element के लिए index position 2 देनी पड़ेगी. Third element, right? If I want to access fifth element, fifth means 1, 2, 3, 4, 5. So index position will be 4. Okay, understood? देखो, now I'm compiling it. Right? Then executing. See, first element 100, third element 300, fifth element 500. है ना? Understood? Attention here. Everyone pay attention here. Size of the array. Int ARR new int 10. It means in this ARR there are 10 elements. Okay, of the integer data type. So one integer variable occupies 4 bytes. Okay, so here 4 multiplied by 10, right? 4 multiplied by 10 कितना हो गया? 40 bytes. Okay, now the character data type की 5 elements की array है, तो इसकी साइज कितनी हो गई? इसकी साइज कितनी होगी? 5 means एक character means what? Character data type is what? 2 bytes. Am I right? Or 1 byte? Character data type is 2 byte. Okay, so 2 byte multiply by what? 5. So it will return you 10 bytes. ठीक है, तो साइज विल बी 2 bytes. एक एलिमेंट को मिलेगा. 5 एलिमेंट्स हैं, तो कितने बाइट्स मिल गए? 10 bytes. ओके. स्ट्रिंग का भी डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग कितने बड़ी, एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स आए हैं. ओके, इफ हियर आई एम स्टोरिंग, देखो बाइट ARR equals to new byte 10. Now tell me the size of this memory size. How much memory will be occupied? 1 byte occupy 1 byte only. Byte data type occupies 1 byte. So 1 multiplied by कितने number of element हैं? 10. So number of elements are 10. Okay, so it will give you 10 bytes. Right? Clear? It will give you 10 bytes. Okay,
So this is the important question, that memory size occupied by the array. Okay. Okay. Then after it, I explained you about the static initialization. ठीक है, तो इसको static initialization बोलते हैं. When we are doing the static initialization, so there is no need to give the subscript size. ओके, सबस्क्रिप्ट साइज में नंबर ऑफ एलिमेंट साइज देने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है. ओके, नाउ दिस इज द एरे. नाउ इफ आई वांट टू स्टोर द एरे, इफ आई वांट टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे, तो फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो आई विल एक्सेस द इंडेक्स पोजीशन 0. If I want to access the third, तो index position 2. If I want to access the fourth, then fifth, then index position will be 4. Right? Understood? Okay. अब देखो, if here I am writing 5. Okay. अभी देखो 0 1 2 3 4 5. Okay. तो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा. फिफ्थ एलिमेंट मीन्स दिस इज द सिक्स्थ पोजीशन, sixth element of array. Okay, but here if I am giving 7th element of array, so what I have to write? 6th, index position 6, right? देखो कंपाइल करते हैं. No syntax error. Clear? No syntax error. Because syntax wise it is correct, but when I'm compiling it, ये देखो वो रेड बॉक्स आया and java.lang array index out of bound exception. Okay, array out of bound exception. See there, java.lang array out of bound exception. See the output. First element 100, third element 300, fifth element 500, sixth element 600. फिर उसके बाद की जो एक्सप्रेशन थी वो इंटरप्रेट नहीं हुई और इट अकर्स एन एरर जो कि एक्सेप्शन है. व्हाट इज एक्सेप्शन? एरेज array index out of bound exception. Okay, so it means what? It means what? जैसे कि स्ट्रिंग में आई थी ना, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जो एलिमेंट नहीं होता था और अगर हम उसको एक्सेस कर रहे होते थे. सेम हियर, मंथ डॉट सिक्स तो है ही नहीं. दिस इज द मंथ 0, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5. ओके, ये मंथ की फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन है. मंथ एरे की सिक्स्थ इंडेक्स पोजीशन है ही नहीं. When the element does not exist in the array, then this index position will occurs you the error नहीं, exception, array out of bound. लिख लो, that is very important. Array out of bound is an exception. Runtime error मतलब कि exception. Array out of bound runtime error is the exception. लिखो यहाँ पर this statement. This statement will occur runtime error, will occur runtime error means exception, means an exception. और उस एक्सेप्शन का नाम क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एरे आउट ऑफ बाउंड. ओके, अंडरस्टूड? एरे आउट ऑफ बाउंड. ओके,
Now I'm giving you some question. Suppose here I'm writing month 0 plus month 1. Then what the output I'm going to get? See, month 0 means index position 0 पर क्या है मेरा 100. Then 100 plus month 1. Okay, 100 plus month 1 means 1 position पे क्या है 200. So 100 plus 200, it should display 300. Let me check. Oh, I didn't do that. Compile. See that 300 means we can perform the operations on the number of elements. ठीक है, array के elements पर we can perform all the operations, plus, minus, multiplication, division and all. Okay,